everyone, and in this lesson I have been asked to discuss about history optional strategy by UPSC guide. So I'm Nandini Maharaj. I have recently cleared the exam, and my request to you all is, first of all, this is only a optional session. So GS students, I'm sorry, but I won't be taking your doubts today. And for optional, let me share some basic information. I had history in my undergraduate, and that is why I chose history optional. I will be speaking about history optional today. Basically about whether or not history is a good optional. And let me give you the positives and negatives from it. Regarding how many marks are, how scoring history is, I did not bother with that. मैंने स्कोरिंग वगैरह कोई भी ऑप्शनल का नहीं देखा. मैंने दिमाग बंद करके हिस्ट्री चूज किया क्योंकि मेरा अंडरग्रेड हिस्ट्री में था. ठीक है. सो स्कोरिंग की तरफ मैंने नहीं देखा. अगर आपकी इतनी सिंपल चॉइस है कि आपने अंडरग्रेड में कुछ किया है, आपको वो आता है और आप ऑप्शनल चूज करना चाहते हैं, तो चूज कर लीजिए. इतना ज़्यादा स्कोरिंग के लिए इधर उधर मत जाइए. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, हिस्ट्री कैसा ऑप्शनल है, इजी है या डिफिकल्ट है, बेनिफिशियल है या आपको पुल डाउन करेगा. तो इसमें बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूं. गुड पार्ट्स अबाउट हिस्ट्री. नंबर 1, बहुत सिंपल है. ज़्यादा एनालिसिस नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. एक सिंपल क्रोनोलॉजी है, बेसिक आइडियाज हैं हिस्ट्री के और फैक्ट्स रटने हैं. ठीक है. तो सिंपल है. नाउ रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल, तो स्टडी मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल है हिस्ट्री के लिए. इट इज जस्ट योर इग्नू बुक्स, योर बेसिक बुक्स लाइक DN झा एंड उपिंदर सिंह, और ये वाली किताबें हिंदी में भी अवेलेबल है. So it's available in Hindi and English both for history, and that is something I would recommend. हिस्ट्री के लिए मटेरियल फाइंड करना बहुत ईजी है. मुझे तो स्कोरिंग भी लगा नॉर्मल अमाउंट्स. मेरे कुछ खास मार्क्स नहीं आए, 330 टाइप्स नहीं है, नॉर्मल 290 आए हैं आफ्टर रीजनेबल अमाउंट्स ऑफ मेहनत. ओके. It is easy. It is very helpful in GS and prelims. So GS means paper 1 में बहुत helpful है और आपका prelims में बहुत ज़्यादा helpful है हिस्ट्री, because बाकी बच्चे काफ़ी confused होते हैं regarding ancient and medieval and art and culture. That clarity is there. Okay. Now the next best thing about history is that काफ़ी एडवाइस और गाइडेंस अवेलेबल है. मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल स्ट्रैटेजी अपनी अपलोड करी हुई है. उसमें एवरी सिंगल सब टॉपिक ऑफ द सब्जेक्ट आई हैव ब्रोकन डाउन एंड टोल्ड यू एग्जैक्टली वेयर टू स्टडी इट. एंड फोर्थली, लास्ट गुड पॉइंट अबाउट हिस्ट्री इज दैट इट इज अ स्टैटिक सब्जेक्ट. सो अगर आप पिछले 30 साल के पेपर करेंगे, सो आराम से यू विल बी एबल टू प्रिपेयर फॉर हिस्ट्री. Okay, so it's a static subject. Previous 30-year questions are a basic question bank for you. Something outside of that is unlikely if you have done the 30-year questions completely and उनके पूरे concepts आपको आते हैं. So that also limits your scope. Now the negative points about history. It is lengthy. Somebody is asking how many months does it take to cover? A long time. 4 to 5 months it will take you. History is lengthy. It is a lot to study. But it is helpful in your GS and prelims, that is there for sure. Second drawback about history, the biggest drawback that I faced is that उसमें map work है. The map work is extensive, it is very detailed, and it requires a lot of time, investment and revision. The map points slip out of your mind like anything else. Right, so map work के लिए exclusively I dedicated 2 hours a day for 2 months consistently. Right, so map work is very difficult, and map work के notes मिलना भी difficult है. Now तो I will share my notes. That is different, but otherwise map work के लिए मैंने notes खुद बनाए हैं. I could not find it from anywhere else. I did not trust any other source. And thirdly, history की test series कम available है, but I did the self study history test series and that was excellent. You can see that.
Regarding uske zyada, now if you have selected history as an optional, how to go for it? You can see my strategy for history optional. It's on Unacademy. It will be very useful. I have put my heart and soul into that course. You can see that. Yes. Now other questions that you may want to ask me, and please restrict yourself to history optional questions only. Now people are asking me about my name. I'm Nandini Maharaj. Okay. Any other questions regarding history optionals now you can put in. ट्वेल्थ में मैथ्स है, so all options are available to you, Sant. I had maths in 12th. I did a lot of things. Udyavanshu, for new aspirants, please go and see my course on strategy for UPSC CSE. That will help you regarding the syllabus and all. कहाँ मिलेंगे आपके नोट्स? demystifycse.in पे 2-3 दिन में अपलोड होंगे, अभी नहीं है. demystifycse.in is initiative by the 2019 batch, and all of us are uploading our notes and our advice on it, and I know that people from my batch are working very hard and very sincerely to upload whatever notes they have. I know Kanishk has written a few articles on maths as an optional, how to study GS. Varnit Negi, rank 13, has uploaded his anthro notes. He scanned like 500 pages of notes, every one of them, and uploaded them. So the entire 2019 batch wants to share whatever they have learned, and you can find that on demystifycse.in. Okay. How to solve math-based question? It is basically a lot of practice and do the previous year questions. Yeah, start doing the previous year questions and you will understand. And beyond that, if you want more like detailed advice, you can see it from my course. I have already uploaded it on Unacademy. इंग्लिश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ऐसा तो नहीं है अजय. आप जो लैंग्वेज मीडियम चूज करेंगे वो मीडियम पे आपको बेसिक कमांड होना चाहिए. यू कैन चूज एनी लैंग्वेज बट यू शुड हैव अ कमांड ऑन दैट लैंग्वेज. माय बुक लिस्ट जयदेव इज ऑन स्ट्रैटेजी फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल. ओके, आई हैव अपलोडेड अ वेरी डिटेल्ड बुक लिस्ट. वो 2 घंटे की बुक लिस्ट है, मैं उतना 15 मिनट में आपको बता ही नहीं पाऊंगी. Okay, so you see it, it's on my Instagram page also. It's highlighted, UPSC करके highlighted. That link you find and you can access that book list. Study plan for 2 years. Tushar, first you please understand the syllabus. You start reading the newspapers and you follow a basic 1-year long test series. ठीक है, अब वो 1 year टेस्ट सीरीज फॉलो करेंगे तो आपको धीरे धीरे खुद की क्लैरिटी होगी. कोई आपको बाहर से, दिस इज फॉर एवरीवन, नोबडी कैन टेल यू फ्रॉम आउटसाइड हाउ टू स्टडी, हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू स्टार्ट. आई कैन टेल यू how to start is by looking at the syllabus and the previous year questions, and by understanding that everything you study has to be from the perspective of the exam. Okay, आप NCERT भी पढ़ रहे हैं तो आप वही NCERT पढ़ रहे हैं जो क्लास 6 के बच्चे पढ़ते हैं. तो आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़नी है और वो पर्सपेक्टिव आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस पढ़ने से मिलेगा. एंड दैट इज वेयर यू बिगिन योर स्टडीज. आफ्टर दैट नोबडी कैन प्लान 2 years फॉर यू. Nobody can tell you these things from outside. You have to start, you have to look at the first few steps and then only you'll know the way. Right? When you're driving at night, you put your headlights on and you see about 10 feet in front of you. You don't need to see the entire direction to your friend's house. You just need to see the first 10 feet in front of you and the next 10 feet become evident after that. Right? सो 2 साल का स्टडी प्लान आप धीरे धीरे खुद के लिए बनाइए. कोई और आपको नहीं बता पाएगा. गूगल मैप्स भी बताते हैं तो पहले एक एक टर्न बताते हैं. राइट? Yes, you can clear UPSC in the first attempt. I did not do it. I cleared it in the second attempt. But अगर आप focused हैं और आपके पास clarity है तो आप कर सकते हैं. How to remember map points? So, Unnati, regarding map points, I used to do revisions quite a bit. So, जैसे मैंने एक मैप बनाया पैलियोलिथिक का, तो मैंने उसी समय अपनी फ्रेंड को बोला कि एक टेस्ट बना के दे दो. उसने 4-5 रैंडम पॉइंट्स मार्क करे.
and I would test it out. Then I asked her, I used my friend quite a bit to help me with map work. She came to my house every day for 2 months to help me with map work. She made the notes for me, she took my test, she sat down with me and made me revise it. Okay, so पहले वो मैप का मेरे को इन्फॉर्मेशन याद करवाती थी. So she would throw a map site name at me. सांघाव के बारे में 4 पॉइंट बताओ, हरप्पा के बारे में 4 पॉइंट बताओ, अतेरापक्कम के बारे में 4 पॉइंट बताओ. So first I would remember the data. Okay, after remembering the data, I would ask her to take my test. And she would take my test. तो जैसे आज पैलियोलिथिक किया तो पैलियोलिथिक का टेस्ट लेगी, कल मैंने मीजोलिथिक किया है, so I would give a mesolithic test. Then after that I did neolithic. Then I would give another test combining paleo, meso, neo. तो मेरा 3 दिन में ही वो वाला बेसिक 3 मैप जो है पैलियो, मीजो, नियो, वो 3-4 बार रिवाइज हो गए हैं. एक बार मैंने पढ़ा है, एक बार she has asked me the information, once I have given test on them individually, and then once I have given test on them in a combined manner. So that I did before prelims, and that's the only thing for history optional that I did before prelims. And after that I did this whole exercise once again. Obviously it went a lot faster. It did not take me 2 months, it took me 2 weeks. Okay. How to start history optional? By reading the syllabus and the previous year questions. Okay. And then you can start from Paleolithic times. Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, Chalcolithic आप शुरू करिए. Paleolithic information is like 1 or 2 pages and do the map. Then the next thing, that way. So don't start from the first syllabus topic, Raj. First topic is sources. वो छोड़ दीजिएगा, जो second topic है उससे start करिएगा. Okay? Book list is on my Unacademy page. Okay? ओझा, वो बहुत डिटेल्ड बुक लिस्ट है. इट विल बी वेरी हेल्पफुल. ओके. PSIR is an option. Elegant Ritik, political science and international relations, you can see that. Supriya, please start by all of you. How to begin? आप syllabus और previous year questions पढ़िए. उसके बाद कोई भी एक स्टैटिक सब्जेक्ट जैसे एनसीईआरटी हिस्ट्री या एनसीईआरटी ज्योग्राफी उठाइए, या पॉलिटी. हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, बेटर इज टू पिक अप ईदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी बिकॉज वो एकदम स्टैटिक सब्जेक्ट्स है एंड यू कैन स्टार्ट विद देम. असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट. हाउ शुड वी चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट? नंबर 1, अगर आपके ऑप्शनल है जिसमें आपने अंडरग्रेड किए, दैट इज द बेस्ट थिंग. Number 2, interest. Number 3, availability of material, कि आपको 10 जगह ना जाना पड़े. Availability of guidance, कि एक ऐसा ऑप्शन चूज कर लिया आपने जिसमें 2-3 लोग ने ही क्लियर किया है पिछले साल, आपको उन लोग ने अपनी स्ट्रैटेजी नहीं अपलोड करी है. You have to figure out everything on your own. That is a little difficult. So find something for which guidance is available, for which test series is available, but those are secondary. Most important is your undergrad. If it's in that is the best thing to take. And second thing is interest. And best thing even after that is to take advice from your family. Your parents, your close siblings, your close friends, your well-wishers, they are the best people to guide you. Coaching centers are good, toppers are good, but we only know ourselves. The best people to guide you is your family and your instinct. So trust yourself. Yes, you can take any subject in 11th or in college and still give the UPSC exam. Book list is on Unacademy. What to avoid during studies in terms of studies? So I would say is that studies has to be very focused. You have to avoid material not connected to the syllabus. This may seem obvious, but people do get a little carried away. Newspaper पढ़ते हैं तो 3 घंटे तक newspaper पढ़ते रहते हैं. ऐसे नहीं करना है. जितना syllabus में है उतना ही आपको newspaper पढ़ना है. ठीक है. और सिलेबस में है ये कैसे पता चलेगा? 2-3 बार सिलेबस पढ़ के, एक बार सिलेबस पढ़ने के बाद समझ नहीं आएगा. ओके. एंड सेकेंडली, इवन इफ यू आर रीडिंग अ बुक विच इज हाईली रिकमेंडेड, जैसे कि रमेश सिंह, रीड इट सेलेक्टिवली.
Read only till the extent that you think is appropriate. Trust your instinct, trust your intellect, हैव फेथ इन योर सेल्फ कि आपको पता है ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है. धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंपॉर्टेंट एंड नहीं इंपॉर्टेंट इंप्रूव होगी, बट थोड़ा फेथ अपने आप में रखिए. Believe in yourself. That is something that people get very scared. They don't trust themselves to know what is important and what is not important. Do your research, do your studies of syllabus and previous year questions, do that very carefully, and then have faith in yourself that you've done your background and you can read selectively. कोई आपको नहीं बता पाएगा सेलेक्टिव रीडिंग क्या होती है, आपको खुद ही देखना पड़ेगा, अपनी इंटेलेक्ट से देखना पड़ेगा, और आपके पास वो इंटेलेक्ट है. You have that intelligence. Everyone has that intelligence. Basic elimination. Okay? And secondly, what to avoid during studies is limit your sources. एक सब्जेक्ट के लिए 4 किताबें मत पढ़िए, एक सब्जेक्ट के लिए एक किताब लेके 4 बार रिवाइज करिए. So there are many more questions that are there. I have to apologize, but I will not be able to answer all of them. It's a limited session. It's just about a 15-minute session. But 2 things I want to tell you. My entire detailed strategy is available on Unacademy for GS. It's called Strategy for UPSC 2020. And my detailed strategy for history optional is also available. And thirdly, the entire IS batch this year, not IS, the entire civil services batch this year, 2019, has made an effort to share their strategy on demystifycse.in. Alright? So you can access more information there on an Instagram live session. This is the amount of information you can get. Can we crack exam without coaching? Yes. Last question that I'm answering. Can you do it without coaching? Yes. Can you do it without a test series? I don't think so. No. Okay? कोचिंग क्लासेस उतनी ज़रूरी नहीं है, बट टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपके पास 5,000 रुपये हैं तो आप टेस्ट सीरीज़ में इन्वेस्ट करिए. ओके, सो थैंक यू एवरीवन. आई होप दैट दिस वाज हेल्पफुल एंड आई वुड लाइक टू से इट इज़ पॉसिबल टू क्लियर द एग्ज़ाम. बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होता है, ये सच है, बट किसी का तो होता है और नॉर्मल लोगों का होता है, तो आपका क्यों नहीं होगा. आप थोड़ा जेन्युइननेस के साथ एफर्ट डालिए, थोड़ा क्लैरिटी के साथ पढ़ाई करिए. जेन्युइननेस एंड क्लैरिटी टू द एग्जाम एंड टुवर्ड्स योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लुक आफ्टर योर मेंटल हेल्थ. आप अगर खुश ही नहीं हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा. अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, अगर आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा. कीप योर फैमिली क्लोज. Talk to your family, and if you need more help than what your family is willing to provide you or able to provide you, if you're still very upset, still very frustrated, still not able to see clearly through a haze of sadness or overwhelming emotions, then seek more help. Seek a therapist, seek a psychiatrist. It is normal, it is okay, and UPSC is a long journey. It is frustrating, it is stressful, and it is on you to look after yourself physically, mentally, emotionally. Okay? So do that. Best of luck and thank you.